this session, we are going to continue our chapter of urban administration. Okay, so first let us discuss what we have studied in the previous chapter. We have studied about rural administration. We have discussed about rural administration, and in which we have studied about patwari, tehsildar, the village police station, how the administration work at the rural level, at the ground level, in the rural area, at the local level. Okay, and in this session we are continuing with the administration and on the level of urban area, urban administration. So urban administration, a city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. Have you ever wondered who is responsible for running all this? Do you know how decisions are made, how the planning is done, who are the people who do all the work? Right. As we have discussed, let's take an example of school, second is village, third is city. ठीक है, यहाँ 1500 लोग, राइट, यहाँ 15,000 लोग, राइट, एंड यहाँ 15 लाख लोग. ओके, सो अब लेट्स सी कि यहाँ स्कूल में कौन कौन एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है. देयर आर प्रिंसिपल, राइट, डायरेक्टर, accountant, teachers, peon, and drivers. There are many persons, right? And in the at the village level, there are many persons in the police station, police, post office, right? And we can take the example of a tehsildar, sorry, not tehsildar, patwari. Okay, patwari. If you think about 15 lakh people, there are many cities, bigger cities having more crowded population, बहुत बड़ी बड़ी markets, बड़ी बड़ी villages. एक छोटे से village में जहाँ 15,000 लोग हैं, 1500 लोग हैं, वहां पर इतने सारे crimes हो जाते हैं. Then police is responsible to maintain the law and order. Okay, and if we talk about the city containing 15 lakh, 20 lakh people, it will consuming a lot of person in handling the administration, right? So who are these people who are handling the day-to-day affairs of in the village, in the city? About crowded markets, have to maintain law and order, right? Have to maintain the records of lands, houses, water, electricity, and every need of people. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir, and Rehna were playing a game of cricket in the street. तो लोग एक दिन क्रिकेट खेल रहे होते हैं. There are four friends playing cricket in the street. Shankar, who bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehna out, she was still battling. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it an easy catch. Instead, Rehna hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehna screamed, "Oh no! Look what I have done." Shankar, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. But Mala, Jahangir, and Rehna were so worried about what had happened, and they told Shankar he did stop thinking about the wicket. Last week, they had broken Nirmala Mosi window and had spent their pocket money to have it replaced. Would have they do dish out money again from their pocket, but who would they pay to this to? To whom did the light on the street belong? Who changed them? Right. यहाँ पर चार दोस्त हैं, स्ट्रीट में खेल रहे हैं. They are playing cricket in the street and one of them bowled so high कि
वो स्ट्रीट लाइट में पड़ती है बॉल एंड इट ब्रोक डाउन, स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। देन उनमें से एक बोलता है कि अरे क्या कर दिया, ये सब क्या कर दिया। एंड वन ऑफ देम से कि हमने पिछली बार पिछले संडे को जो हमने खेला था, देन वी ब्रोक द विंडो ऑफ निर्मला मासी, एक मासी के घर की विंडो तोड़ दी थी और उसे रिपेयर कराने में हमारी सारी पॉकेट मनी खर्च हो गई थी, राइट। बट इस बार हमने लाइट तोड़ी है, तो क्या हमें इस बार भी पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, पॉकेट मनी अपनी सारी इसी पे खर्च कर देंगे। और अगर हम खर्च करेंगे तो इस लाइट को मेंटेन कौन करता है, इस लाइट को चेंज कौन करेगा, हम अपने पैसे जो हैं वो दें किसको, राइट। निर्मला मौसी के घर का जो विंडो तोड़ा वो तो उनको पे कर देंगे डायरेक्टली, बट जो स्ट्रीट में लाइट लगी हुई है उसके लिए किसको पे करेंगे, टू होम दे विल पे, हु मैनेज दीस लाइट्स, हु चेंज दीस लाइट, रात को बंद कौन करता है, सुबह बंद कौन करता है, रात को शुरू कौन करता है, राइट। Rehana's house was the closest and they ran and told her mother about what had happened. Rehana's mother said, I don't really know these things in great details, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing lights. The best person to ask him, Yasmin Khala. She just retired from municipal corporation. Go and ask her. Rehana came back soon. Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rena's mother were good friends. The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no person, no one person that you can pay the money to. There is a big organization called the Municipal Corporation that take care of street light, garbage collection, and garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean. I have heard about municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. Okay. तो जो माला है वो अपने घर जाती है एंड अपनी मम्मा से बोलती है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और हमसे स्ट्रीट लाइट टूट गई, और अगर अब ये चेंज करानी है देन हमें किसको पे करना होगा, हम कैसे पे करें, उसे मेंटेन कौन करता है, उसे चेंज कौन करता है, लगाता कौन है, जलाता कौन है, बंद कौन करता है, हु मेंटेन द स्ट्रीट लाइट्स, राइट। देन माला की मम्मी कहती है कि मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, बट शायद म्यूनसिपैलिटी के बारे में मैंने नाम सुना है। एक म्यूनसिपैलिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो शायद इन सारी कामों को मेंटेन करती है, राइट। वो कहती है कि तुम्हारी एक खाला है, उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, देन तुम उनसे जाकर पूछो कि क्या है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और अगर स्ट्रीट की लाइट टूट गई है देन यू टू होम यू हैव टू पे, राइट। देन सी गो टू हर खाला, और खाला बोलती है कि हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही इंसान है जिसको आपको पे करना है, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो कचरा उठाने का काम, कचरा कलेक्शन का, वाटर सप्लाई का काम, आपकी स्ट्रीट लाइट का काम, मार्केट को क्लीन रखने का काम, सफाई का काम, ये सारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो माला कहती है कि यस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इस कम्युनिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने भी सुना है। जब मलेरिया हुआ था हमारे एरिया में, तो उन लोगों ने बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। यस, यू आर क्वाइट राइट। Municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. Means municipal corporation also has the responsibility so that there should be no breakout of disease. अगर कोई breakout ऐसा disease का हो जाता है, कोई नई disease आ जाती है, then municipal corporation will take the responsibility कि वहाँ ensure करे कि वहाँ पर rules and regulations, procedures, अगर कोई ऐसा नियम है then it should be followed ताकि बीमारी फैले ना। It also runs school भी चलाती है municipal corporation, and hospitals and dispensaries, and make gardens and maintain them, said Yasmin Khala. Then she added, our city, Pune, is a big city, and so here is a municipal corporation. It is called municipal corporation. In smaller towns, it is called municipal council. Okay, so we have seen that there are many types of villages and there are many types of cities. There are big cities like Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad. Okay, these are big cities जहाँ की population 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख ऐसे है, काफी पॉपुलेशन है। ओके,
उन सिटीज में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट देयर आर स्मॉल टाउन्स, टाउन्स की जैसे कि जो विलेज और गांव को जोड़ते हैं वो टाउन्स, जहाँ की पॉपुलेशन गांव से ज्यादा है बट सिटी से कम है, गांव से ज्यादा फैसिलिटीज है बट सिटी से कम है। ओके, दिस इज कॉल्ड टाउन। और टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन को जो मेंटेन करता है उसका नाम होता है म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, एंड लेट अस सी कि उस काउंसिल में, उस कॉर्पोरेशन में होता कौन कौन है। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, who decide where is a park should go? Did you have to make interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? asked रहना। रहना पूछती है कि जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी तो क्या आपको ये सारे काम करने होते थे कि मतलब पार्क कहाँ बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है कि इस एरिया में पार्क बनेगा, पार्क को मेंटेन कौन करेगा, तो पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, झूले हैं या फिर पानी के लिए हैंडपंप है, क्या क्या होना चाहिए, हु डिसाइड दिस ऑल वर्क्स एंड हु मेंटेन दिस। यस्मीन यस्मीन खाला कहती है कि नहीं, इतना सारा काम मुझे अकेले नहीं करना होता है, उनके लिए अलग अलग लोग होते हैं। नो रहना, I was working in the accountant office of the corporation, so I just work on a pay slips. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to take a lot of decisions as well as to do a lot of work to keep the city clean. The decisions like where a park or the new hospital should go are usually made by the ward councillor. Okay. As in the case of our school, as in the case of our village, अगर कोई पानी के लिए डिसीजन लेना है, राइट, तो पानी के लिए ग्राम सभा में बात हुई, देन वहां डिसीजन लिया गया कि वाटर शेड सिस्टम लगाएंगे हम लोग। देन उन लोगों ने क्या किया कि ब्लॉक लेवल का जो वीडियो होता है उससे डिस्कस किया कि ये ठीक रहेगा या नहीं। ओके, और अलग अलग लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई ये वाली कमेटी पानी का काम देखेगी, ये वाली कमेटी रोड का काम देखेगी, ये स्ट्रीट लाइट का काम देखेगी, ये डेवलपमेंट का काम देखेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखेगी। ओके, उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें कि कचरा का डिपार्टमेंट कौन सा है, गार्बेज कलेक्शन का काम किसका है, राइट, स्ट्रीट लाइट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डिपार्टमेंट का है, अलग कमेटी का है, राइट। तो यस्मीन खाला कहती है कि नहीं, मैं तो अकाउंटेंट ऑफिस में थी और वहां मुझे पे स्लिप्स पे काम करना पड़ता था। और ये सारा काम होता है, वार्ड काउंसलर डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सा पार्क बनेगा, क्या फैसिलिटीज होंगी। दिस वर्क इज डिसाइडेड बाई वार्ड काउंसलर। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड्स काउंसिल गेट इलेक्टेड। और जो वार्ड्स होते हैं वो, जैसे बहुत बड़ा सिटी है, मतलब 2 करोड़ की पॉपुलेशन का सिटी है, और वार्ड, उसमें कितने वार्ड काउंसिलर होंगे, अलग अलग सिटी को, एक बड़ी सिटी को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा विलेज होता है, विलेज विलेज को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग वार्ड से अलग अलग पर्सन इलेक्ट होके आते हैं, एंड देन दे सिट इन द सीट्स ऑफ अ सरपंच, राइट। उसी तरीके से सिटी को भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि वहां से मान लीजिए 2 करोड़ की सिटी है और 5 वार्ड में डिवाइड कर दिया उसे, देन इतने इतने लोगों को द्वारा वो लोग इलेक्ट किए जाएंगे, राइट। 40 लाख लोग इसमें हो गए, 40 लाख इसमें, देन एक पर्सन यहाँ से इलेक्ट होगा जो 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, और उनसे वार्ड काउंसलर चुना जाएगा, उनमें एक वार्ड काउंसलर होगा। जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट में हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट में पढ़ा था, उसमें क्या था, सरपंच होता है, एक 5 लोग होते हैं, उनमें से एक सरपंच है, ऑन एंड अदर आर कॉल्ड फंड्स। सो अदर आर कॉल्ड वार्ड काउंसलर्स एंड ऑल आर selected. Then these all different सिटी में विलेज जो पार्क है वो कहाँ बनेगा, these all are complicated decisions that affect the entire city and taken by a group of councillors whom forms a committee to decide and debate issues. For example, if a bus stand need to be improved or a crowded marketplace need to have its garbage cleaned more regularly, its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, and street lighting, etc. that decide on the work to be done. Okay, गार्बेज कलेक्शन का काम अलग कमेटी करेगी, राइट, रोड मेंटेनेंस का काम अलग कमेटी करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम अलग कमेटी करेगी, स्ट्रीट लाइटनिंग का काम एक अलग डिपार्टमेंट करेगा।
So these all works are divided into different departments, and these all departments are headed by wards who are elected from different parts or different wards of a city, right? So next is, when the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. और अगर किसी वार्ड में कोई दिक्कत है, देन उन वो लोग अपने काउंसलर को, वार्ड काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल wires hanging down, then the local counselor can help them get in touch with the electricity authority. इफ मान लीजिए कि आपके घर के टाउन में आप रहते हैं या सिटी में आप रहते हैं, तो घर के पास जो खंबा है इलेक्ट्रिसिटी का, इट मीन्स रेड पिलर, और जो दूसरा है उसके बीच का तार टूट जाता है, मतलब ये जो वायर है वो टूट जाता है या नीचे लटक जाता है, आप किसको बताएंगे? आपके वार्ड में ये दिक्कत है, आप किसको बताएंगे? वार्ड काउंसलर को कॉल करेंगे, उसे बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा है और इससे कोई दिक्कत हो सकती है, किसी दिन ये गिर गया या गिर चुका है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, एंड ही विल इंश्योर कि हाँ मैं इसे ठीक कराता हूँ. ओके, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दैट वर्क. नेक्स्ट, while the councillor committees and the councillor decide on issue, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillors are elected. So, as we have studied, seen, we have seen that ward councillors are elected. ओके, और जो जैसे कि हमने ग्राम सभा का, पंचायत का, दिस इज विलेज एंड दिस इज सिटी. ओके, ओके, देन कम्स सरपंच. Here is municipal corporation. Sorry, सरपंच. It is the person. Here is municipal corporation. Okay. So, in municipal corporation, it is divided into wards. Wards, and these are headed by ward councillors. Okay, so these ward councillors are elected. They decide that this all work should be done in our city. Like there are many ward councillors, from different wards, and they decide that in our village, this in our town, in our area, this all work should be done. Then they are elected. They are not officers. They are elected persons responsible for doing the work. And then comes the commissioner, like your commissioner, who are appointed by government. They are officers. They will implement whatever is decided. Implement the decision. As in the case of a village, we have seen that there is a gram sabha where the things are to be decided कि क्या क्या होना है या. Okay, then like कि वाटर के ऊपर डिसाइड हुआ कि वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना है, देन वीडियो से उन लोगों ने डिस्कस किया, देन he will implement these all things कि हाँ इतना पैसा लगेगा, you have to implement like this. So in this way, the city administration work and the village administration work, one is elected and other is appointed by the government. Okay, so let's continue from there. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillors are elected. So how are these decisions made? Asked Rehna, who have never gave up on her train of thought. Well, of course, what
meet and they make a budget and the money is spent according to this. The ward councillors try and ensure that particular demand of their ward are placed before the entire council. The decisions are then implemented by the administrative staff. Okay, then let's take we have as we take the example of a 2 crore and this is divided into 5 wards. Okay, 40 lakh and 40 40 40 and 40. Okay, यहाँ से एक वार्ड काउंसलर आ रहा है and ward councillor 3, 3rd, 4th, 5th. It is a council of 5 ward councillors, right? And they decide कि इसने बोला कि मेरे यहाँ पानी का काम होना है, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, इसने बोला एंड ही विल से कि मेरे यहाँ एक पार्क बनना है. देन दे विल डिसाइड कि अब ये सारा काम जो है वो कैसे होगा. एंड आफ्टर द डिसीजन इज टेकन, डिसाइड हो चुका है कि वाटर का इस तरीके से काम होना है, सब लोगों ने इसे डिसाइड किया है एक दूसरे से डिस्कस करके. देन दे विल टेल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ or the commissioner, right, who is the officer appointed by the government. हमें ये सारा काम करना. You have to implement these all policies in our city or in our town. Okay. Yasmin Khala, enjoying the question that the children asked. No adult asked her about her job, and the children's questions provided her the opportunity to relieve some of her experience. But the city the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar curiously. शंकर पूछता है कि इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा काम होता है, इतना सारा काम होता है, उसके लिए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है. He had by now luckily forgotten about the cricket match and the incomplete over. Yes, the work in the city is divided into different departments. So there is the water department, garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. I worked on account in the sanitation department, Yasmin Khala, and then went to offer the children some kebabs to eat. He said, yes, this all work in municipal corporation is done by different departments, right? Of garbage collection, of the garden maintenance. So different departments, and there are many persons in every department to handle or to manage that work. Jahangir ate his kebabs at the top speed, and as he walked them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collect go? He asked कि इतना सारा garbage create हो रहा है होता है and they collect, हमारे घरों से बाहर से कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा कचरा जाता कहाँ है? Where does this all garbage go? The other well still eating when Yasmin Khala began to answer. But this question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Even earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remain uncollected, attract dogs, rats, and flies. Also, people get ill from the smell. At one point, things become so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they did sick from staying in the street too long. यस्मीन खाला कहती हैं कि हाँ ये गार्बेज जाता कहाँ है. तो यस्मीन खाला बताने लगती हैं कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ आप घरों के सामने कचरा डाल देते थे, उसकी वजह से बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते थे और उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है बहुत गंदी हो चुकी थी, या जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती थी. और उसके लिए हमने एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट किया. एंड व्हाट इज दिस कम्युनिटी प्रोटेस्ट? Yasmin Khala continued. The woman was very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department, but I was not sure how long it would take. Then it was Gangabai who said what it is the ward councillor who we should go to and protest since we ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of the house, and he came out and asked them what was wrong. So she is telling a story. कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स
लाइक डॉग्स, कैट्स एंड अदर फ्लाइज, कीड़े मकोड़े आ जाते थे, और जिसकी वजह से बीमारियां होती थी। और जो औरतें थी उस एरिया की, जो बच्चे थे बीमार हो रहे थे, एंड एवरी मदर वाज फ्राइटन कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देन दे ऑल डिसाइडेड कि हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारी सुनेगा बात को। सो दे ऑल, उनमें से एक गंगाबाई है। गंगाबाई बोलती हैं कि जिस वार्ड काउंसलर को हमने इलेक्ट किया है, जिसको हमने वोट दिया है, वी शुड गो टू हिम, कि वो हमारी बात सुनेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्बेज क्लीनिंग इन आवर स्ट्रीट। Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying the garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. So the ward councillor say कि हाँ, आपकी ये दिक्कत मैंने सुनी है, और ऐसा करते हैं कि कल आप लोग आइए, एक पिटीशन साइन करा के लाइए, मतलब एक अपनी रिटन कंप्लेंट लिखिए जिसपे सबके साइन होने चाहिए, एंड हम कल सब लोग कमिश्नर के पास चलेंगे, एंड वी विल ऑल्सो टेक अ engineer, sanitation engineer, who will told to the commissioner that this situation is very very dangerous, how bad the situation is. The evening children ran from houses to house, making sure that as many as families are possible signed the petition. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to municipal corporation office. The commissioner met with the large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." So their locality where that Gangabai and Municipal Corporation retired Hala lives, they belong to a very poor society, poor locality, and there was a heap of garbage in the front of their houses, and they went to commissioner. So they went to वार्ड काउंसलर, एंड वार्ड काउंसलर टोल्ड देम कि आप कल एक पिटीशन साइन करा के लाइए जितने भी एडल्ट्स हैं उनसे, एंड हम एक सिविल इंजीनियर को, हम एक सैनिटेशन इंजीनियर को अपने साथ लेकर कल काउंसलर के कमिश्नर के घर चलेंगे। देन दे गो टू हिज हाउस, एंड वो लोग वहां बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। कमिश्नर एक्सक्यूज देने लगता है कि भाई हमारे पास इतने ट्रक्स नहीं है, हम कचरा कैसे साफ करेंगे। देन गंगाबाई बोलती है कि भाई अमीर लोगों की सोसाइटी से कचरा साफ करने के लिए तुम्हारे पास ट्रक्स हैं। और उसे सुनकर वो चुप हो जाता है, मीन्स कमिश्नर चुप हो जाता है। देन yes, he said that he would take care of them immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. यस्मीन खाला बोलती है कि हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि 2 दिन में, हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं और उस कचरे को आप साफ कराइए, वरना हम और बड़ा ग्रुप लेकर वुमेन आएंगे और यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, सो दैट द स्ट्रीट गेट क्लीन। और उस दिन से हमारी स्ट्रीट क्लीन रहने लग गई। आज रहना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनप्रेस्ड, और रहना पूछते हैं कि अच्छा इसी वजह से हमारी जो लोकेलिटी है, हमारी स्ट्रीट है, क्लीन रहने लग गई। वेल, विद not within 2 days, and the day after, another large and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. वो कहती है कि नहीं, 2-4 दिन बाद तो नहीं, हमें एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करना पड़ा था, उसके बाद जो सैनिटेशन सर्विस है हमारी लोकेलिटी में अच्छी हो गई। वाओ, दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड मूवी विद अ हैप्पी एंडिंग, said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their question, and then, before they left, Rehna said, "Oh, I have one last question, Khala. The two dustbins that we have got at home now, are they also Gangabai's idea?" Khala began laughing. "No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we sort our garbage, it reduces their work." So, one of the child asked गंगाबाई कि क्या जो हमारे घरों में जो डस्टबिन हमें प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें हम अपना कचरा डालते हैं, वो भी गंगाबाई का आइडिया था। उन लोगों ने गंगाबाई ने बोला होगा कि भाई हमें तुम डस्टबिन दे दो, उसमें हम अपना कचरा डाल देंगे। बट खाला से कि नहीं, वो गंगाबाई का आइडिया नहीं था, वो
जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया था कि सब लोग अपना कचरा अपनी अपनी डस्टबिन पर डालें, ताकि सुबह जब हम कलेक्ट करने आए तो इजीली कलेक्ट हो सके। The children thanked Khala and walked back down to the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran back to the Khala's house. Okay, so this all is in this chapter. In this chapter, this all is given that how the administration, municipal corporation works in the city, how the administration of cities are managed. And here is an interesting story of Surat. The city of Surat had a plague scourge in 1994. Surat was one of the dirtiest cities in India. Houses, hotels, and restaurants would dump their garbage into the nearest drain and street, which made it very difficult for shippers to collect and transfer the garbage into selected dumps. In addition to this, municipal corporation did not collect the garbage as often as it have should have, lead this situation getting worse. Plague spread through the air and people who have the disease would have isolated. Okay, 1994 में सूरत में क्या था कि सूरत में एक बहुत ही खतरनाक सा प्लेग फैल गया था, एंड दैट वाज अ सूरत प्लेग, जिसे सूरत प्लेग कहते हैं। क्योंकि क्या था कि सूरत बहुत ही गंदा रहता था। सूरत सिटी जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी मिल्स हैं, उन उनसे कचरा बाहर लोग स्ट्रीट पर डाल देते थे। उसके बाद उसे कोई उठाता नहीं था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छे से काम नहीं करती थी। देन क्या होता था कि वो इकट्ठा होता जाता और उसमें बहुत सारी गंदगियां फैल गई। उसमें बहुत सारी जो चूहे थे, रेट, दे यूज टू ब्रीड इन दैट कचरा में। एंड उसके बाद वहां पे एक प्लेग फैल गया, रेट का प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई। होटल्स, रेस्टोरेंट, हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ होता था, उसकी वजह से इतनी बीमारियां हुई और प्लेग फैल गया। एंड देन 1994 में जब इतना बुरी तरीके से प्लेग फैल गया, देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब हमें कचरा साफ करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब नहीं, दोबारा नहीं होना चाहिए। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी। बहुत लोगों ने वो सिटी ही छोड़ दिया कि गंदा सिटी है, आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं रह सकते। The scars of the plague ensured that municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continued to remain one of the cleanest city in India, and now Indore is the cleanest city in our uh, country, and the second is Surat. These both cities are the cleanest city in India right now. And इन दोनों के साथ एक ऐसा ही हुआ है कि इंदौर भी पहले काफी गंदा रहता था, बट when the municipal corporation take the responsibility to clean the city and to take care of the health, education, and everything is going good right now. And these both cities are cleanest city in India. Okay, so let us see, is there anything? Okay. Here is a question: how does the municipal corporation get its money? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी काम कराती है, मान लीजिए कि स्ट्रीट में लाइट लगवानी है, पानी भी कराना है, इलेक्ट्रिसिटी का देखना है, देन उसको पैसा कहाँ से मिलता है? हु प्रोवाइड दैट कॉर्पोरेशन मनी? Providing running and so many services require a lot of money. The municipal corporation collect this in different ways. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. People who own homes have to pay a property tax as well, and the taxes for water and other services. The larger the house, the more the tax, property tax. However, from the 20 to 30% of the money the municipal corporation earns. Okay, so there are many types of taxes: property tax, water tax, land tax, house tax, and other services tax are collected by municipal corporation from the people and all the societies. There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shops, then you have to pay a tax or for this as well. Also, the next time you go to see a movie, carefully add your ticket because you are paying a tax. So whenever people say that we do, why government provide us these facilities and how government get money? Government gets money to provide these facilities from our taxes, and it is government's responsibility to provide us all the facilities because we are providing tax on everything, that is water, land, house, electricity, property tax.
and all types of taxes are provided by our society, by us. So this all is in this chapter, and now we will continue in the next chapter.